what we've learned in mental model is not something that you will master by doing it once. Okay, this is something that requires practice, lot of practice. Okay, एक तरीका इसका ये है कि आपके सामने जितने पैटर्न्स हैं आपके मैनुअल में सबके एग्जांपल्स भी हैं. Okay, you've heard lots of those examples that I've been using with you. You create as many as you can examples of each pattern and then make combinations. Okay, आपके पास मैनुअल में हर पैटर्न के इंडिविजुअल भी है और उसके साथ उनके कॉम्बिनेशंस भी हैं. Okay, so you use, make, for example, आपने कहा mind reading, and if I'm using mind reading to get a certain thing done, that's covert hypnosis, by the way. Okay, this is one of the major parts of covert hypnosis, using language. Okay, covert hypnosis is all communication, it's all language. Okay, so it's like using this. अगर मैं फर्स्ट करूँ किसी दोस्त को मैं कन्वेंस करना चाह रहा हूँ कि आज मुझे डिनर कराए. Okay, and I'm using just mind reading statements. How will I use it? Make it a fun exercise for you. Okay, अच्छा अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डिनर कराए and I use only lost performatives, how will I use it? Okay, then if I use combination of these two, okay, and then you create as many as you can. Generally, if you create about 100 examples of each pattern, you will find your brain will actually get it completely. But 100 is not the limit. Richard Bandler's said that when he was doing this, he had a file and he was like normalization ki puri trance induction based on normalizations. You think about this, if you're using just mind reading and creating a trance induction. I know you like to relax. And I know that you want to learn to relax deeply. And you know exactly what it is like to relax deeply. Because you know how to relax deeply and you have relaxed in the past, you will find that relaxing will be much easier for you. And learning to relax is something that you have always desired, you have always wanted. And today, as you are listening to what I am saying, and more importantly to what I am not saying, while listening to the words that I am saying, and paying attention to the gaps between the words, so listening to what I am not saying, will cause you to go into an even deeper trance than you have ever expected. Okay? So you start formulating suggestions. Ek cheez, do not get into this grammatically incorrect or correct. Be hypnotically correct. Okay? Here's the other thing. मैंने ये किया था, before I went for my practitioner training, I did that actually. मेरे पास, it's like I wanted to learn, I didn't have any training, I didn't have any other resources. I have this firm belief, there is always a solution to anything. Every problem has some solution. So I started like coming up with ideas. And जिस तरह से मैंने English language का आपसे जिक्र किया कि मैंने British Council से tapes लाया and I started listening to them. And I used to after that, I started doing the same thing with hypnosis. मैंने Richard Bandler की एक audio tape ली, in the very first thing that I did, और मैंने उसकी जो tape थी उस ज़माने में audio cassettes के ऊपर आते थे, okay? और वो 45 minutes की audio थी, और मैं उसको play करता और transcribe करता, फिर rewind करता, फिर दोबारा सुनता, फिर ट्रांसलेट करता. एंड देयर वर टाइम्स जब उसका कोई एक्सेंट की वजह से या मेरी इंग्लिश इतनी वो नहीं थी, लाइक आई यूज्ड टू मिस हियर एंड देयर. अब उसको बार बार सुनता. तो वो जो 45 मिनट्स की ऑडियो थी, इट टुक मी अबाउट 5 hours टू ट्रांसक्राइब इट एंड इट वाज ऑन 45 पेजेस. ओके, एंड आई रोट द होल इंडक्शन, 45 मिनट्स की कंप्लीट इंडक्शन. उसके बाद मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया. अच्छा, उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए भी ये प्रॉब्लम होती है. मेरा जो हिप्नोसिस का मैनुअल है उसके अंदर देयर आर सेवरल स्क्रिप्ट्स. ओके, अब क्या होता है, बहुत सारे लोग के सर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, वो लेकर जाते हैं किसी ट्रांसलेशन वाले के पास. वो ट्रांसलेशन वाला उसकी नोक पर जो है ना ग्रामर ठीक कर देता है, वो ग्रामर ठीक करता है, उसका हिप्नोटिक इफेक्ट कर देता है. ओके, बिकॉज वो जो पढ़ रहा होता है वो क्योंकि उसने अंग्रेजी एमए किया हुआ है, और वो अंग्रेजी एमए से वो उसको उर्दू में ट्रांसलेशन के लिए वो मास्टर है इस ट्रांसलेशन में, एंड ही ट्राइज टू करेक्ट द ग्रामर.
You correct the grammar and you lose the hypnotic effect. Okay? So मैंने क्या किया, मैंने उसको ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद आई प्लेड रिचर्ड बैंडलर्स टेप एंड आई मॉडल्ड हिज इन्फ्लेक्शंस इन हिज वॉइस. ओके, एंड आई डिड दैट सेवरल टाइम्स. फिर मैंने उसको प्ले करके एंड उर्दू में उसके, वो अंग्रेजी में बोल रहा, मैंने उसकी आवाज़ को उतार चढ़ाव के साथ उर्दू में बोलने की प्रैक्टिस की. The interesting thing that happened was this. 1999 में when I went for my practitioner training और हम exercises कर रहे थे and we were doing this hypnosis का, तो मेरे instructors और साथ में जो लोग थे वो आके मुझसे उन्होंने पूछा, how did you do that? Where did you learn this? And I have self-trained myself. Okay, it's just practice. Okay, you can do the same. Many years later, मैंने रिचर्ड बैंडलर की एक वीडियो देखी in which he's talking about how he did exactly the same thing by transcribing Milton Erickson's videos and his audios and his hypnotic inductions. I think that's a very quick way. Okay, you can do the same.